Ladies and gentlemen, it gives me pleasure to welcome warmly the Honorable Governor of Maharashtra, Sri Bhagat Singh Koshyari ji, our chief guest. Big round of applause for Honorable Governor. Thank you. We now have a group photograph with our students. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Bharat Mata ki Jai. Thank you. Kindly take your seats. All four of you can symbolically please hand over the flowers to our chief guest. Yeah. Okay. Ladies and gentlemen, big round of applause for our chief guest. Thank you. Thank you very much. As we have the lamp lighting ceremony and we wish this event every success, let's welcome this great event with a big round of applause. Come on, friends. Thank you. We wish every success to this great GlobalSpin trade conclave. Thank you, sir. Kindly take your seats. For the welcome address, may invite Dr. Swarupa, Director General, National Institute. International conference on global spin trade conclave on eco-handlooms, eco-textiles and fashion. So ours is a 60-year-old organization established in the year 1962 by the government of India. We have been in the services of nation, promoting entrepreneurship development and helping the MSMEs to go to the next level. We are also promoting the concept of doubling the women entrepreneurs. We are into cluster development. We function with the help of schools of excellence and centers of excellence. Largely we are into capacity building. We train officers across the nation related to industries development and other allied departments. Till today we have trained more than 5 lakh officers from India and 10,000 international delegates representing 150 nations. And we did a lot of capacity building for the youth and women. More than 5 lakh youth we have already trained since a decade. We have several centers and we are helping government of India in policy making and advocacy. We are into short-term training programs also and consultancy information services. I also take this opportunity to extend a warm welcome to Mr. Vijay, Chairman, World Trade Center, Mumbai, and Mr. Pavan, Godiawala, Director, National Institute for Fashion Technology, Mumbai, and His Excellency Seewraj, Nundlall, Councillor, Investment and Trade, the Mauritius High Commission, and other important delegates and honorable esteemed members who are invited for this international conference.
I also extend my welcome to Miss Masina, the faculty teacher from Zimbabwe. And we also respectfully recognize and acknowledge the presence of the ambassadors representing various nations to this conclave. And I also extend a warm welcome to the practitioners, the development professionals, R&D institutions, and who are related to the textile world and trade. Sir, I am happy to announce that we are also into cluster development. We are helping a lot of artisans who are into handlooms, textiles. We have completed one cluster in Banaras. In Telangana we are into Andhra Pradesh. In Maharashtra we have our clusters related to textiles. So we have a fashion technology business incubation center in our campus, and that's how we have helping the artisans and the stakeholders related to MSMEs in textiles. It's our pleasure to have you here, sir, and I welcome all the esteemed members present over here for this 2-day international conclave on textiles and eco-textiles and eco-handlooms. And I also extend warm welcome to you all. When you are in Hyderabad, visit our institute. Also, you can follow us in social media platform. Any assistance related to entrepreneurship development, skill development, research, consultancy, education, you are all welcome to NIFT Hyderabad. Thank you all. Thank you very much, madam. May I invite Mr. Vijay, Kalantari, and both trade center to say a few words, please. Thank you. We are going to discuss a very important topic today on textiles and how textile designing, innovation into textile technology, and what best we will move forward with. You know, India, 2% of the GDP is from textile, and we have 10 crore people employed in textile sector. So this is a very big industry. Earlier we used to call Ahmedabad as the Manchester of India, and Mumbai was the second. So in Maharashtra we grow a lot of cotton. Why not we use it here? And khadi and textile could be promoted in a big way. And there are various textile exports in garments, ready-made garments, handicrafts. So these are all areas where we could work with. I don't want to take much of your time, and I will leave it to His Excellency the Governor of Maharashtra to speak to us and address us. But I'm again grateful to him for sparing his valuable time and being with us. Thank you, sir. Thank you very much, Mr. Vijay Kalantari. May now invite Mr. Pavan, Godiawala, Director NIFT Mumbai, to share his thoughts. Thank you. Honorable Governor of State of Maharashtra. So we are thankful for your presence on the occasion. My other guests on and off the dais, speakers and experts across the world, industry representative, and my dear students. A very warm good morning to all of you. The current atmosphere just reminds me a very famous quote of Walt Disney. I dreamed, I tested my dreams against my belief, I dared to take risks, and I executed my vision to make those dreams come true. I am sure this quote is not new to all of you, and you followed it, and that's why you are here. SMEs are the backbone for any economy, and they represent 90% of the total enterprise in majority of the countries. Since I come from a design fraternity, when I look towards the handloom, which is kept alive by the SMEs through cluster, it gives me a feeling of sitting on a gold mine. It's so rich in tradition, personalized, unique, sustainable, joyful, and still contributing towards the nation's economy and society at large. But let me also caution you that it needs great effort to realize the gold from the mine. I am pretty confident that this event organized by Ministry of Textiles and Ministry of MSME, which aggregates multiple stakeholders from across the globe
from the area of eco-textile, eco-handlooms, apparel industry under one roof to provide a forum of dialogue, brainstorming and chalking out of the future action plan to address the challenges and other opportunities in the area. This will surely open up the multi-dimensional new horizons to its stakeholders, new faculty members and the students. Once again, I congratulate all the organizers of the GlobalSpin Trade Conclave for making this conscious effort, and I really feel honored to be the part of this event. Once again, I thank Your Excellency for sparing a valuable time for us for this event and encouraging this activity, and especially I also invite Your Excellency to the NIFT Mumbai also, and thank you. Thanks for patient hearing. Jai. Thank you very much, sir. I now invite our chief guest, Honorable Governor of Maharashtra, Shri Bhagat Singh Koshyari, to kindly come and address us. Please welcome the Honorable Governor with a big round of applause. This pleasure of the presence of this GlobalSpin Trade Conclave at this World Center. I'm very pleased to be with you, and I thank the committee inviting me here. Seewraj, Dr. Vijay Kalantari ji, Dr. S. Swarupa ji, Yash ji, Pavan ji, and all our guests from abroad, Councillors and other friends. मेरे यहाँ उपस्थित सभी सहभागी हैं. I think you may have problems with Hindi because all of the audience here mostly they would like me to speak in Hindi or Marathi, that I know. So that's why in between wherever necessary I will speak in English also. No problem with English. Because the audience is there that understand either Hindi or Marathi or mostly, and they will be happy to listen in Hindi. So you would like the Councillor for Vijay? पहले तो हमारे स्वरूपा जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर ये कार्यक्रम शुरू किया है, ऑर्गेनाइज किया है. हम लोग मैं लंबा नहीं देखूंगा. ये जो MSME है, तो ये MSME, ये जो छोटे और मध्यम के हमारे इंडस्ट्रीज है, हैंडलूम है, ये इनका इस देश में बहुत बड़ा स्थान है. मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ खबरियाँ सुनाता हूँ कि कल ही मैंने पेपर में देखा और मैं उसको पता नहीं अभी कहाँ क्या साथ में भी लाया था. एक्सपोर्ट ऑफ $400 बिलियन, यानी $400 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट ये MSME जो हो गया. छोटी उसमें गारमेंट सारी जितनी भी चीजें हैं, इस 400 बिलियन का मतलब होता है, आप लोगों को बताऊं, 30 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है. उसमें आप सबका भी योगदान है. तो इसीलिए आई काउंसिलर फॉर दैट आपको सबको मेरा बधाई है, क्योंकि ये कल ही समाचार था और इसमें बहुत ही उत्साहवर्धक है. और मुझे लगता है कि जस्ट बिफोर ओपनिंग ऑफ योर दिस inauguration of this conclave, such a good news is, I think, good news for all of us and for our friends from other countries also, neighboring countries also, friendly countries also. ये देश जो है, ये भारत वर्ष, आप सब लोग यहाँ काम करने के मैंने बाद थोड़ा सा एग्जीबिशन देखा और मैं बहुत जगह देखता हूँ. कई कुछ बैंकों का काम करते हैं, कई किसी और का काम करते हैं. पैठणी साड़ी तो अपने आप में बनारसी साड़ी जैसी प्रसिद्ध है. इतनी चीजें मैं देखता हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो हम सब लोग हैं, पर्टिकुलरली
those who are governing the state and those who are administrative head in the states, I think they overlook all this. ये उस ओर उनका शायद ध्यान कम जाता है। इतना अच्छा काम हो रहा है, हम उसकी ओर देखते नहीं हैं। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसे कॉन्क्लेव के द्वारा हम we can promote, not only promote, but I think we can reach our goal of $5 trillion economy. That you can do $5 trillion economy, not only by big factories, big industries, but only from small. Oh, there is one book in English I have gone long back. Small is beautiful. ये जो छोटा है ये बड़ा सुंदर है. Small is beautiful. और आपके जो काम है ये देखने में they are very small, बहुत छोटे छोटे होंगे. आप लोगों को लगता है अरे मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये छोटा छोटा है. परंतु all these small units ये इतना contribute a lot. बहुत अच्छा आपके माध्यम से देश का और हमारी इकोनॉमी पर आपका बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है. और मुझे लगता है कि इस देश में जब आप लोग काम कर रहे हो, ऑल आर यंग वुमेन एंड मेन हियर, आप सब लोग जब काम कर रहे हो इस मार्ग में, अभी शुरू में आपको कठिनाई आती होगी, लेकिन आप देखते हैं कि आप अगर करते जाएंगे तो ये देश जो है, I don't know how many you would have read Ramayana. I think none of you have read Ramayana. That is a very historic epic in India. We all have much respect for Rama and Sita. Everybody Indian knows the story of Rama and Sita and all the Ramayana. सब जानते हैं रामायण के बारे में. अब आप लोग जानते हैं कि रामायण में अगर किसी ने रामायण का मानस पढ़ा हो या रामचंद्र जी के ऊपर जो इस प्रकार का पूरा एक पूरा कितने आए थे, कितनी पूरी फिल्म टाइप बनी थी, तो कितना उसमें वर्णन देखा होगा आप लोगों ने कि जब सीता जी को वनवास होता है, राम जी को वनवास होता है, तो राम जी बन जाते हैं तो उनकी जो स्टेप मदर है, द स्टेप मदर सेज दैट यू पुट डाउन ऑल योर, रिमूव ऑल योर दीज प्रिंसली क्लोथ्स एंड ऑल दिस एंड दैट एंड गेट दी सिंपली द बल्कल वस्त्रा. बल्कल वस्त्रा मीन मेड फ्रॉम बैम्बू एंड अदर थिंग. बल्कल वस्त्र किससे, जैसे बैम्बू से आजकल बना रहे हो ना, तो ऐसे लाइक द क्लोथ्स ऑफ बैम्बू एंड अदर सच ऑब्जेक्ट्स. तो सब कपड़े उतार दिए, बैम्बू के या इसके कपड़े, बल्कल वस्त्र पहन लिए. और जब जंगल में पहुंची तो वहाँ एक ऋषि थे, अत्रि ऋषि, उनकी पत्नी थी अनुसुईया. तो उन्होंने कहा देखो बेटा फिक्र मत करो, अब तुम जो है ये कपड़े उतारो, तुमको तो मैं ऐसे कपड़े देती हूँ कि 14 बरस तुम्हारा वनवास खत्म होने तक ये कपड़े इतने अच्छे रहेंगे कि तुमको धोने भी नहीं पड़ेंगे. यू वोंट हैव टू वॉश दोज क्लोथ्स. आई एम हैंडिंग ओवर टू यू सच क्लोथ्स, यू वेयर इट एंड यू विल नीड नॉट नीड इवन टू वॉश देम एट ऑल बिकॉज दे विल बी फ्रेश एवर. तो बताइए कैसे कपड़े उस महिला के पास होंगे, उस सन्यासिनी के पास होंगे जो कभी मैले नहीं होते. तो इसके प्रकार इसका अर्थ यह है कि हमारे यहाँ का देश में इतनी ऊंची कला थी. अभी आप लोगों ने नॉट लॉन्ग बैक बिफोर कमिंग दिस ब्रिटिश राज हियर, देयर मलमल, ढाका की मलमल, यानी कितना था, एक उसमें अंगूठी के अंदर, रिंग के अंदर ढाका की मलमल की साड़ी, वन साड़ी इन रिंग या इन व्हाट यू कॉल दिस फिंगर रिंग, उसमें रख लो. इतनी प्रसिद्धि थी. तो ये कोई पुरानी बात नहीं, ये तो बहुत नई बात है. हिस्ट्री नोज इट, एवरीवन नोज अबाउट इट. लेकिन ब्रिटिश राज आने से ये जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था ये बुरी तरह से इफेक्ट हुआ. सब फैक्ट्रीज की ओर, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर आ गए, तो जिससे हमारी रोजी रोटी होती थी वो ख़त्म हो गया. लेकिन आज फिर से देश के अंदर पिछले 30, 35, 40 वर्षों से ये कोशिश की जा रही है कि हम लोग फिर से अपने हैंडीक्राफ्ट को उसको प्रोत्साहित दें, प्रमोट करें
और उसको प्रमोट करने से हम से ये जो आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है, दिस सेल्फ रिलायंट इंडिया, आई थिंक इट कैन बी मेड बाय ऑल दीज स्मॉल यूनिट्स। ये हमारा प्रयास है, इस देश का प्रयास है। प्रधानमंत्री जी इस देश में बहुत अधिक काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग यदि जो काम कर रहे हैं, अभी मैं बाहर देख रहा था, बहुत जगह और जगह देखा, हमने इससे भी मैंने और जगह अधिक चीज़ें देखी हैं, यदि हम सब लोग इस प्रकार का काम करेंगे तो हमारा देश तो आगे बढ़ेगा ही। एंड यू विल गॉट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपको कोई नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मनी टाइम्स पीपुल से आपने कितने रोजगार दिए, हाउ मेनी एम्प्लॉयमेंट्स यू हैव गिवन। व्हेन दे से एम्प्लॉयमेंट, when these media and other critics say employment, they mean employment means the government jobs. So government jobs are not so much here. तो एक्चुअली यू ऑल आर एम्प्लॉयड, और आपको गिनते ही नहीं कि आप भी एम्प्लॉयड है करके, आपको भी एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ये बहुत बड़ी चीज़ है और आप सब लोग इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जब आप इसमें काम में लगोगे, इसका इतिहास देखोगे, तो हमारे आज भी हिंदुस्तान में गारमेंट्स का सबसे अधिक एक्सपोर्ट बाहर होता है। और ये जो फैब्रिक्स है, इस प्रकार की जो सारी चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है कि जितना अधिक प्रमोट करेंगे, हमारी डायरेक्टर जनरल कह रही थी कि हम लोग वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, और अधिक आप इनके संपर्क में आइए। गवर्नमेंट से जो प्रमोशन होता है, हमारे स्टैंड अप के लिए, स्टार्टअप के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इतनी सारी योजनाएं बना रखे, उन सब का आप लोगों को लाभ उठाना चाहिए। उस योजनाओं का लाभ उठाइए, पता है क्या क्या काम है, उन काम का लाभ उठाएंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं तो जब इतिहास पढ़ता हूँ, आप बच्चों से आश्चर्य करोगे कि इतिहास के लोगों ने, पहले लोग सोचते थे भारत के लोग जंगली हैं, जब देखा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो वहाँ की खुदाई की गई तो उन्होंने कहा अरे ये तो सम मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन। तब लोगों को लगा कि व्हाट इंडिया इज, तो वहाँ उन्होंने कहा कि अरे वो तो जो वहाँ रिमेन्स मिले हैं, उन्होंने कहा तो धोती पहने हुए हैं। और बताइए कि ये हमारे बड़े बड़े जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने इस प्रकार की खोज की है। तो हमको गर्व होना चाहिए कि हमारा देश ऐसे ऐसे कपड़े बनाता था, ऐसी ऐसी चीज़ें करता था। हम सब लोग फिर से एक बार खड़े हों और देश को आगे बढ़ाएं। उसके लिए आप सबको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं विठोबा से ही प्रार्थना करता हूँ, आप सबको ताकत दे और उस सब में आप आगे बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, आपका व्यापार बढ़े, ये मैं शुभकामना करता हूँ। अगेन आई थैंक यू ऑल, धन्यवाद। Thank you, धन्यवाद sir. Big round of applause to our chief guest, Honorable Governor of Maharashtra. And as he accepts it, I would like you to again give him a big round of applause. Thank you. Thank you, sir. Your presence here today means a lot to us and to the industry. Thank you very much, sir. Thank you. Kindly take your seats. To propose a vote of thanks, micro, small and medium enterprises. Dignitaries on the dais, first of all, I take the pride on behalf of the National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, and the organizers. Sir, we are very happy to be, you are here in our presence. And sir has talked about the Ramayana, he has talked about 3 lakh exports, and a very important thing he has talked about, the small is beautiful, small is always beautiful. Micro and small enterprises make very beautiful things which are heavily sorted out in the different parts of the world. Sir, we promise you from National Institute for MSME that we'll handhold all the rural artisans and those traditional artisans who make all the beautiful things. And sir, your mention about the Indian fabrics, especially during the period of Ramayana, the cloth is to be there for 14 years and it is not going to get spoiled. That shows the kind of tradition we have in our country, the kind of artisans we have in our country in different parts of the world.
So thank you, sir. We'll promise you from Ministry of MSME and National Institute for MSME that our contribution will be very much there for achieving the 5 trillion economy. The dream of Modi will assure you that this is going to happen. We assure with our co-organizers, IAMKHADI also. I also thank Vijay Kalantari, sir, the chairman, World Trade Center, Mumbai. He has talked about the vital statistics related to the gross domestic product from textiles, which is 2%, but this is going to increase over a period of time, and the Indian textile industry with its R&D infrastructure is going to make it very, very big in the coming days, sir. And from bottom of my heart, sir, we thank you for giving you this beautiful space, and your people, especially Sangeeta ma'am, was helping us. I was very much there. I'm thankful to our entire team because she has been the instrumental in making this program very, very successful. Thank you, madam. Thank you, Sangeeta ji, for the entire support. I cannot name everyone here, but her team is the best team which I could see. I also thank Pavan Godiawala ji, NIFT director, who has, of course, supported us in many ways in preparing the schedule, the moderators, the speakers, and so on. And we also have Dr. Nigam, who has actually helped us in, is going to be the panelist for so many things. Thank you, Nigam ji, thank you very much. And I also thank the entire press, which is very much present here, which is going to take care of the entire proceedings of this conference for 2 days. I also thank His Excellency, who is very much here, Seewraj Nundlall, Councillor, Investment and Trade from Mauritius High Commission. I also thank the foreign delegates who are here from different parts of the world. They have come here, so they are going to participate and they are going to share their valuable knowledge, and we integrate through these economies and we make our economy a bigger economy, the world's largest economy in the coming years. And we are going to definitely see that India is going to become the global leader, not only from economy point of view, but also from the textile industry is going to boom like anything, along with MSME. Thank you one and all. Thank you very much, sir. Thank you for your valuable time. Thank you very much, Dr. Reddy. Thank you very, very much for a group picture. One final time to honor our chief guest with a big round of applause, please. Come on. Thank you, Governor, sir. Thank you very, very much. Ladies and gentlemen, thank you very much. That was the inaugural session. I would now like to take a break for you. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम यश आर्या है। मैं फाउंडर हूँ IAMKHADI फाउंडेशन का। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे आए, और ये जो आप हमारे समक्ष शामिल हुए हैं ग्लोबल स्पिन ट्रेड कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम में, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ पे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, और आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं भी आप लोगों जैसा एक स्टूडेंट था आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले। जब मैं पढ़ के निकला तो मेरे पास 3 ऑप्शन थे। पहला था या मैं अपने फादर का बिज़नेस ज्वाइन करूं, दूसरा था या मैं नौकरी करूं, और तीसरा था या मैं खुद का अपना काम शुरू करूं। जब आपके फादर आपको सपोर्ट करते हैं तो आप उनके बने बनाए ढांचे में उसको संभाल के आगे ले जाते हैं। आप गिरते हैं तो संभालने वाले आपके फादर, आपके पेरेंट्स या आपके दोस्त होते हैं। जब आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको दिशा दिखाने वाले उस कंपनी के मालिक होते हैं, आपके बॉस, मैनेजर्स होते हैं। पर जब आप अपना काम करते हो तो वहाँ पे ना ही आपको कोई दिशा दिखाने वाला होता है,
ना आपको ये बताने वाला होता है तुम कब गिरोगे, और ना ही आपको कोई ये बताने वाला होता है कि गिर के उठना कैसे है और उठ के दोबारा चलना कैसे है। वो ये जितनी भी इस कठिनाइयों की जो इसका सामना वो आप खुद करते हो, खुद सीखते हो और खुद आगे बढ़ते हो। और अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हो तो हम कहते हैं आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो। और जब आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हो तो आप अपने साथ साथ 4, 5, 10, 20, 50, 100 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देते हो, उनको रोज़गार देते हो। अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपकी जर्नी की बात करूँ तो जब आप पढ़ के निकलेंगे तो इन तीनों में से कोई एक ही आपके सामने ऑप्शन होगा, और चौथा ऑप्शन है कुछ नहीं करना, जो मुझे नहीं लगता कि आप में कोई इसे करेगा। अब सवाल ये है कि जब आप खुद कुछ काम करना चाहते हैं तो समस्या क्या आती है। वहाँ पे भी 3 किस्म के लोग हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वास्तविकता है, ये एक सच्चाई है कि वहाँ पे आप जैसे लोग भी हैं और वो लोग भी हैं जो अपना ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, जो आपके सीनियर्स हैं, आपसे 2, 4, 5 साल सीनियर्स हैं। वहाँ पे कठिनाइयाँ क्या आती हैं? सबसे पहली जो कठिनाई है वो आती है पैसे की। हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? बिज़नेस शुरू करने के लिए भी पैसा चाहिए, और बिज़नेस जब आपका चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी पैसा चाहिए। और अगर आपको कोई अच्छा बायर मिल जाता है और उस बायर्स का अगर आप सामान बनाते हैं, आप सामान उसका बनाते हैं, तो सामान को बनाने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो जो मुद्रा है ये बहुत एक नेसेसिटी है किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में, एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर के जीवन में, टू हेल्प हिम ग्रो। दूसरा, टेक्नोलॉजी। आज आप मुंबई बैठ के दुनिया के किसी भी कोने पे किसी भी व्यक्ति से, जो आपका बायर है, बाइंग एजेंट है, या कोई आपका प्रोस्पेक्टिव आपका बायर हो सकता है इन फ्यूचर, या सोशल मीडिया के माध्यम से आप उस तक पहुंच सकते हैं। पहुंचना इज़ प्रमोशन, marketing, but ultimately that should end towards sales, where you get the money and he gets the product. Product can be handlooms and handicraft, कुछ भी हो सकता है, but जब तक आदान प्रदान पैसों का नहीं होगा उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, तब तक वो सेल्स नहीं होगी। वही सबसे एक मुश्किल साइकिल है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल स्पिन ट्रेड कॉन्क्लेव के द्वारा, वो है कि हम आप लोगों को किस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम ले जा सकें, न्यू इमर्जिंग मार्केट्स में हम आपको उन वहाँ के जो लोग हैं उनसे कैसे जोड़ सकें, वहाँ पे उनकी जो बाइंग पैटर्न्स हैं, बाइंग बिहेवियर है, या उनकी जो बाइंग नेसेसिटीज़ हैं, उससे हम आपको कैसे मिलवा के जोड़ के उनसे आप सीख सकते हो। यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग चाहिए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नहीं चाहिए। आप जो बना रहे हो, आई मे नॉट बाय, बट मुझे क्या चाहिए, अगर आपको पता है, आप बनाते हो, तो ज़रूर मैं उसको खरीदूँगा। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन तो सभी कर रहे हैं, द फोकस इज़ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को, उनकी डिमांड्स को, उनकी डिज़ाइंस को, उनकी नेसेसिटीज़, रिक्वायरमेंट्स को समझ के आप लोग बनाओ, वो आपसे ज़रूर खरीदेंगे। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस। ये 3 चीज़ों को आप अपने साथ, अपने डिज़ाइन इनोवेशन के साथ जोड़ के यू कैन गो ग्लोबल। देश में आप चीज़ें बेचो, बट माय एज अ फाउंडर ऑफ IAMKHADI, तो मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल स्पिन ट्रेड कॉन्क्लेव का, जो मैंने ये कॉन्सेप्चुलाइज़ किया, उसकी सोच यही थी कि किस तरीके से इस देश के जो हमारे सबसे छोटे से छोटे जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम दुनिया के बड़े से बड़े रईस से रईस लोगों तक कैसे जोड़ सकते हैं। और उसका सिर्फ एक ही माध्यम है कि आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए उन तक पहुंचने की। और वो कैसे है, उसमें आपको पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको इनोवेशन चाहिए, और साथ ही साथ आपको मार्केट एक्सेस चाहिए। कोविड के पहले और कोविड के बाद की दुनिया में काफ़ी बदलाव आ चुका है। कोविड के पहले हम बनाते थे, वो खरीदते थे। कोविड के बाद लोगों ने ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा है। हम में कई ऐसे लोग हैं, इंक्लूडिंग इन माई फैमिली, वी हैव लॉस्ट मैनी लव्ड वंस। आई माई सेल्फ, मेरी फैमिली में आई लॉस्ट माई ताया जी एंड ताई जी। उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो आई वॉज, दे कंसिडर्ड मी एज देयर सन, तो आई लॉस्ट देम। मुझे पता है कि कोविड से कई लोगों के फैमिलीज़ में बहुत
लोगों ने दुख को देखा है नज़दीकी से, दुनिया ने भी इसको देखा है, उनकी सोच जीवन के प्रति बदली है। नाउ दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स रिसाइक्लेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली, सर्कुलर इकोनॉमी। ये ऐसे बज़वर्ड्स हैं जहाँ पे आज आप लोगों को उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के दुनिया में आपको अपना एक नाम बनाना है। हमारा इस कार्यक्रम को करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जोड़ के आपको एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे आप लोग उस मार्केट को जानें, समझें और उस मार्केट के हिसाब से अपने सामानों को बनाएं और फिर आप उनको बेचें। वी हैव इन्वाइटेड आवर फॉरेन डेलीगेट्स amongst you to discuss and share their experiences, that how, what new innovative things they are doing in their countries, which is not being done in our country, and how we could learn from them. It's all about knowledge sharing. हमें हमेशा एक दूसरे से सीखना चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। मुझसे 10 साल छोटा व्यक्ति भी मुझसे ज़्यादा समझदार हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, बट आज मुझे जावा, C++ नहीं आती, आई फॉरगॉट। Then I did my MBA from Indian Institute of Foreign Trade. I went and lived in Copenhagen, Sweden, Malaysia, Bangladesh. So मैंने आज दुनिया के 4 देशों में मैं रहा हूँ, मैंने वहाँ से कई चीज़ें सीखी हैं, and that I would like that you guys should also learn that how our global world or global economy works. I wish you all a very best of luck for your future, and I would personally want आप सभी लोग यहाँ पे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बने। हमने एक मुहिम शुरू की है उड़ान की भारत सरकार के साथ, और उसमें हमारा एक ही लक्ष्य है, आप जैसे लोगों को सिखा के पढ़ा आप सब चुके हो, बट उसके आगे आप लोगों को अपस्किल करके थोड़ा बहुत मुद्रा लोन, पैसे की व्यवस्था करा के, एक्सेस टू कैपिटल, उसके बाद आपको मार्केट से जोड़ के विद द बायर हमें आप लोगों को स्वतंत्र कर देना है, जिससे आप लोग बिजनेस कर सकें, एक सक्सेसफुल माइक्रो एंटरप्रेन्योर बन सकें। आप लोग कामयाब होंगे तो ये देश कामयाब होगा, यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। आज देश में नौकरियाँ नहीं हैं। आज तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे हर 25 से 30 लाख लोग हर साल पढ़ के निकलते हैं। हमारे देश में उतनी नौकरियां आज की स्थिति में नहीं हैं। जो ये आज यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, इससे भी काफ़ी प्रभाव, काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी और अन्य देशों की इकोनॉमी पे। आगे आने वाला वक्त कुछ साल, 2-3 साल मुश्किल है। उसके मद्देनज़र आज सबसे अच्छा जो आज एक प्रयास हम कर सकते हैं वो ये है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फॉर जॉब्स, लेट्स बिकम एन एंटरप्रेन्योर। खुद का काम शुरू करते हैं, जिसमें सरकार आप लोगों को सहायता करने को तैयार है। सरकार आपके साथ है, आपके लिए है। द गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल। इट्स नॉट अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अबाउट द गवर्नमेंट। दे आर फॉर यू एंड मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो इस देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका एक ही सोच है कि इस देश का जो युवा है, जो आज बेरोज़गार है, उसको आप मुद्रा दे के, सिखा के आप उसके सामान को बेचो, बिकवाओ। अब वो डोमेस्टिक बेचे या इंटरनेशनल बेचे। डोमेस्टिक बेचेगा तो उसके लिए कई मशीनरीज़ हैं, बट इंटरनेशनल बेचने के लिए संस्थाएं जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी संस्थाएं और अन्य जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, वहाँ पे उनका योगदान आ जाता है। सो NIFT का एक जुड़ाव वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी संस्था से होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो आज हमारे माननीय जो यहाँ के अध्यक्ष, चेयरमैन हैं, वो हैं श्री विजय कलंतरी जी। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के बोर्ड में हैं। आज दुनिया में तकरीबन 396 सिटीज़ में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना है। हर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना केवल 2 ही मकसद से की गई थी, एक ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड आदान प्रदान, कॉमर्स आदान प्रदान प्रोडक्ट्स का और मुद्रा का, यही उसकी स्थापना का एक बुनियाद है। अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से आप लोग जुड़ते हैं या आप इस लक्ष्य के साथ जुड़ते हैं जो मैंने शुरू की है, जो मुहिम मैंने शुरू की है, उसमें मैं आप लोगों को आई कांट मेक एनी प्रॉमिस, बट आई कैन गिव यू अ कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड। वी विल डू आवर बेस्ट टू कनेक्ट you with the market through under the leadership of Dr. Ajit Nigam,
हु इज़ हेडिंग एज अ CEO ऑफ NFDI, जिनके साथ हमने ये काम शुरू किया है, एंड विद स्मार्ट एज जिसको लीड कर रही हैं श्रीमती डॉली भसीन जी, जो टेक्नोलॉजी को और फैशन को साथ में जोड़ रही हैं इन फॉर ग्लोबल मार्केट फॉर यू, कि आज आप लोगों को किस तरीके से फैशन के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के मार्केट एक्सेस दिया जाए और उसमें मुद्रा का, पैसे का कैसे उसको इन्फ्यूज़ किया जाए, वही हमारा पूरे उड़ान का कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारा डिज़ाइन इनोवेशन को लेके हो, इंक्यूबेशन को लेके हो, एक्सेलरेशन को लेके हो, टेक्नोलॉजी को लेके हो, पैसे को लेके हो या मार्केट को लेके हो, ये पूरा जो बड़ा सर्कल है इसमें कई स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको मैं एक मंच पे लेके आया। यहाँ पे जितने भी आप लोग देख रहे हैं जो ऊपर हमारे पार्टनर्स हैं, इन सभी को एक मंच पे मैं लेके आया इसी सोच के साथ, भला आपका हो, आपको मार्केट मिले, आपको पैसा मिले, आप सीखें और एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बने। ये मैंने अपने लिए नहीं किया है। I have not done anything for myself. It is for you, so that you are the future of India. आप कामयाब होंगे, देश कामयाब होगा, इकोनॉमी मजबूत होगी, GDP मजबूत होगी, हमारे देश में मुद्रा आएगी, हमारे देश में बैलेंस ऑफ ट्रेड मजबूत होगा, हमारा जो डॉलर वर्सेस रुपी जो आज डिक्लाइन हो रहा है, जो आज 76 रुपये पहुँच गया है, वो हमारा मजबूत होगा। तो हर एक कदम मेरा इस देश के प्रति समर्पित है, आपके प्रति समर्पित है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसकी एक ही सोच है, आप कामयाब हों। आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। आप कामयाब नहीं होगे, मैं कामयाब नहीं होऊंगा। मैं यहाँ पे किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा। आवर बिजनेस मॉडल इज़ नॉट मनी। मुझे एक पैसा नहीं चाहिए आप लोगों से, ना हम मांगते हैं, ना वो हमारा बिजनेस मॉडल है। मेरा बिजनेस मॉडल है, आपकी कामयाबी ही मेरा बिजनेस मॉडल है। वही NFDI का बिजनेस मॉडल है, वही हमारे जो पार्टनर्स हैं उनका भी यही बिजनेस मॉडल है। लोग पूछते हैं कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, इसमें आपका क्या फ़ायदा है? मेरा फ़ायदा है, और मेरा ये फ़ायदा है, आप कामयाब होंगे तो मैं कामयाब होऊंगा। इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करूंगा अपनी बातों को, और चाहूँगा कि आप लोग जो हैं वो अंडर लीडरशिप ऑफ DG सर, इस पूरे मुहिम को सपोर्ट किया दो लोगों ने। एक सेक्रेटरी यूपी सिंह जो आपके चेयरमैन NIFT हैं और सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स हैं, और दूसरे BB स्वेन जी जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ MSME हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर ग्लोरी स्वरूपा जो DG हैं NIMSME की, एंड हमारे बीच में जो डॉक्टर अजीत निगम बैठे हैं जो NFDI के आज CEO हैं। इन लोगों ने मेरी सोच को सपोर्ट किया। इसलिए नहीं किया कि इसमें कहीं मेरा कोई स्वार्थ है, नहीं है। उन्होंने इसलिए किया, उसमें आप लोगों की सक्सेस है, आप लोगों के लिए किया। इसके बाद एक प्रेजेंटेशन होगी जो हमारे मॉरिशस के बारे में होगी। उसके बाद डॉक्टर अजीत निगम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो आप लोगों की सहायता करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सेस। हमारा फोकस या हमारी सोच का फोकस या मेरी सोच का फोकस एक्सपोर्ट्स है। किस तरीके से मैं आप सभी लोगों को एक्सपोर्टर बना दूं। एक्सपोर्ट का मतलब है यहाँ का बना हुआ कपड़ा या कोई भी प्रोडक्ट जो आप बनाते हो, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट या टेक्सटाइल्स में, उसको दुनिया के किसी भी मार्केट में बायर तक पहुँचाना, वो ही मेरी सक्सेस है। आपने जिस दिन अपना 1 रुपये की मुद्रा, चाहे वो आपने डॉलर में बेचा हो, येन में बेचा हो या आपने पाउंड में बेचा हो, जिस दिन आपके अकाउंट या आपके कंपनी अकाउंट में जिस दिन वो 1 पाउंड या $1 आ जाएगा, वही मेरी कामयाबी है। और उस दिन से आपकी एक नई जीवन की शुरुआत होगी। जो आज गवर्नर सर ने बोला $400 बिलियन, वो कैसे पहुँचा? वो एक व्यक्ति के से नहीं पहुँचा, आप जैसे करोड़ों लोगों ने की वजह से वो पहुँचा है। $500 बिलियन का टारगेट हम नहीं पहुंच सकते बिना आप लोगों की वजह से। आप लोगों का उसमें योगदान चाहिए, आज नहीं तो कल चाहिए। आप पढ़ रहे होंगे कि अभी तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, यू कैन स्टिल हैव एन आइडिया। उस आइडिया को आप जो है NFDI में इंक्यूबेट करो, और इंक्यूबेट करके उस आइडिया को आप एक रियलिटी में कन्वर्ट करो। यहाँ पे कई लड़कियाँ और लड़के बैठे हैं, एक मैंने सोचा, उस सोच को वास्तविकता में लेके आओ। Get it into a product, a physical tangible product. उस प्रोडक्ट को then through NFDI and through Miss Dolly Basin Smart Edge Initiative आप उसको further आगे ले जाओ। आप कहोगे पैसा नहीं है, सरकार पैसा देने को तैयार है। आप कहोगे मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, NFDI स्मार्ट एज वो आपको देने को तैयार है। आप कहते हो मेरे पास मार्केट नहीं है, आपको NFDI स्मार्ट एज वो भी देने को तैयार है। आप कहते हो मेरे पास बायर भी है, मेरे पास प्रोडक्ट भी है, बट मुझे बेचना कैसे है, वहाँ पे भी आपके साथ में DGFT और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। और उसके बाद आप कहते हो कि अब मुझे और बिजनेस चाहिए और बायर्स चाहिए, तो फिर मैं हूँ। आज तकरीबन 7,000 बायर्स के साथ हम डायरेक्टली जुड़े हैं, तकरीबन 250 देशों में। बायर्स की दिक्कत नहीं है, बायर्स हैं,
बायस पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। बायस इस दुनिया में कभी कमी नहीं रही बायस की। बट बायस को क्या चाहिए? 3 चीज़ें, क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस। एंड यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट विद देम। वो आपका सामान तभी खरीदेगा जब आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से उससे कम्युनिकेट कर पाओगे। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड लर्न। एक हमारी NIFT की एक आपकी इंटर्न है हमारे बीच में, सुरुचिता दास, वो NIFT दिल्ली में है, वो फैशन कम्युनिकेशन की 3rd ईयर की स्टूडेंट है। उससे मैंने बहुत सीखा हाउ वी कैन कम्युनिकेट इन फैशन, अमंग्स फैशन। दैट्स समथिंग विच ये पूरा जितना भी आप देख रहे हैं उसने डिज़ाइन किया है, इट इज़ बीन डिज़ाइन बाय हर ओनली। सो मुझे लगा कि डिज़ाइन और फैशन कम्युनिकेशन की कितनी ज़रूरत है। आई एम नॉट फ्रॉम योर सेक्टर, सो मुझे आपसे सीखना है और आपको कामयाब बनाना ही मेरा ही मकसद है। इसी से मैं इस बात को ख़त्म करूँगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग यहाँ पे आए, उसके लिए मैं आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, थैंक यू। Thank you, Yash ji. Yash bhai, so beautifully you spoke, and I got a lot of messages from your talk today. So thank you. Big round of applause again for Mr. Yash Arya, who's the founder and the CEO of IAMKHADI. It now gives me great pleasure to invite His Excellency Seewraj Nundlall, who is going to talk on, he's the Councillor for Investment and Trade from the Mauritius High Commission. Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency with a big round of applause. Thank you. Namaskar to all of you, and thank you, Mr. Yash, to invite me for this beautiful event at the GlobalSpin Trade Conclave. I'm very honored to be here. I was supposed to be here at the inaugural function, but unfortunately I got something happened, so I couldn't make it. But thank you again for giving me this opportunity. So I heard you very attentively, and you mentioned few important points, I think, which is very true. You can produce as much as you want, but if you don't have a market, how are you going to sell, right? That's the first thing. You get a market, but your product is not accepted by your customer. What do? So you have to build the product according to the requirement of your customer in that market. So which means that when you look at different markets, so there are different sets of customers, different sets of requirements are there for these customers. So I'll take you through a presentation about Mauritius and how Mauritius we have been successful in terms of developing our own industries and finding markets successfully. So I'll take you through this presentation, and after that I'll also show you a movie where you will see how we have done things in Mauritius, and you will understand the environment in Mauritius. So basically, most of you may be knowing that Mauritius exists, but where is it on the world map? So as you can see, it is down south, southwest of India, and it's also on the east coast of Africa and Madagascar. Why I'm showing you this map, later I'll show you how we have captured the markets from this position that we are in the Indian Ocean. So this is about the SME sector, because we heard the governor saying about the MSMEs, how they have contributed into the $400 billion of exports that India has achieved today. So I think it is very important to understand that the SMEs play a very big role in each and every country, including Mauritius. Today they are contributing to around 12% of exports, 55% of total employment, and to the economy they are contributing around 40%. In terms of numbers, when you look at Mauritius, the number of SMEs in Mauritius exceeds 1 lakh SMEs. So very briefly, what is the ecosystem in Mauritius when we speak of SMEs? So we have SME Mauritius, which is a government organization, government institution that helps SMEs to set up, to grow, and to develop. So some of the government support which are there in terms of the SMEs, we have the marketing support scheme. I mean, different schemes are there in terms of marketing, technology, capacity building, employment. So different schemes are there. This is a success story of one of the companies that started in the 80s. They started, the gentleman, the founder of this company,
He started by purchasing fabrics from he went on the streets of the capital city in Port Louis. He went in each and every shop to find fabric, buy the fabric, make the clothes, do the stitching and all that, and started looking for markets to sell. That's how he started. And then his business started to grow slowly. So he started then at that point in time in 1986 with 30 employees in a small garage type thing. So with one sewing machine, and then this is where the company started. Today, when you look at the company after so many years, it is one of the largest employers in Mauritius. SME started, today one of the largest employers in Mauritius, and they are employing more than 10,000 people in Mauritius. The company name is CMT, Compagnie Mauritienne de Textile Limited. So they are a global leader in terms of jersey wear apparel industry. They are largest vertically integrated manufacturing plant in sub-Saharan Africa with the latest technology in terms of their spinning plants, in terms of their knitwear and everything. So, and they have also expanded overseas. Today they have plants, factories in Bangladesh and also in Madagascar. And as I mentioned about, spoke about finding markets earlier. So this is a strategy that they have used. They have opened office around the world in developed markets where they want to sell their products. So in US, in Europe and all that. Of course, they're headquartered in Mauritius. So when we speak about the economy of Mauritius, so it's a diversified economy, and we have various sectors which includes, today we are promoting pharmaceutical and biotech in terms of manufacturing in Mauritius, logistics and supply chain, professional services, media and creative. So different services we are promoting in Mauritius. The country is a very safe country in terms of coming and doing business, whether you want to invest, whether you want to do business, or you want to use Mauritius as your platform for the region, for exports, or even for the exports of goods and services as well. So a very quick intro about Mauritius. So we are a small island in the middle of the Indian Ocean, southwest of the Indian Ocean. Population-wise, we are 1,000 times less than the population of India. But when we speak about the market access that Mauritius provides, then you will see that we cover a market that is equally bigger than the market that India provides. So some of the sectors you can see there, manufacturing is there, services, and different sectors. The main economic sectors today that you can see is manufacturing, tourism, financial services, real estate, and ICT. So, of course, when we speak about India, Mauritius and India, we have a very special and privileged relationship that has grown over the years. In fact, when you look at the history of our country, of Mauritius, our forefathers came to came to Mauritius from India back almost 200 years back, and I am the 5th generation in Mauritius. So, and then when they came to Mauritius, they came to work as laborers in the sugarcane fields, but over the years they have been able to achieve progress, and today they have made us where we are today in terms of a prosperous country. So in terms of the trade figures, you can see bilaterally in terms of exports. Today we are exporting around $30 million of products to India, but we are importing more than that, so almost $400 million a few years back, and this figure keeps on growing. Major imports from India includes petroleum products, fabrics, of course for garments, because we have a huge textile industry in Mauritius, pharmaceuticals, food items, chemicals, and others. And what we're exporting is seafood, medical devices, optical goods, and all that. So some of the companies which are already present in Mauritius, you will see the big names like SBI, Indian Oil, but you also have SME companies, Indian SMEs which are there, like Cloud Factory is one of the SMEs which is present in Mauritius, Spectra I. So here I will take you through what we have done recently in terms of the bilateral relationship. Basically, we have signed a new agreement, which is a comprehensive economic and cooperation partnership agreement. That is an agreement that covers trade in goods and trade in services between the two countries. That gives a new framework, a formal framework for people to be able, for companies to be able to do business and import and export bilaterally. So it was signed last year. It became operational on 1st of April 2021. So for Mauritius, India has provided access to 615 products that can be exported from Mauritius to India
as a preferential market access, which means that we can export to India either duty-free or at reduced duty or at tariff rate quotas. Similarly, for India, there are 310 tariff lands that can be exported from India to Mauritius. So some of the products from Mauritius that can be imported into India include special sugar, rum, beer, fruit wine, garments, and canned tuna. So I was speaking about the markets. So this gives you a nice overview about Mauritius being a strategically located position for market access. Through this, you can see that we cover nearly 70% of the world market in terms of preferential market access. What this means is that we have agreements, trade agreements with developed markets of European Union, UK, US, regional markets of Africa, and also to the emerging markets of China, India, and others. So, for example, with Africa, if somebody is producing in Mauritius and exporting to Africa or even to US and EU, the products will go duty-free. I'll take one simple example. Garments, we were talking about textiles and all that. Garments, for example, if somebody is exporting garment from India to South Africa, made in India to South Africa, has an import duty of 40% import duty. The same garment, if it is manufactured in Mauritius and exported to South Africa, there is zero duty. So because of the trade agreements that we have, there is a huge advantage of considering Mauritius in terms of producing and exporting. I'm just taking an example of garments, but there are many more products. And so in this way, we cover around 70% of the world population in terms of the preferential duty-free market access. And some of the products that we have been exporting includes, as I mentioned, textiles, seafood, sugar, food items, and rum, and all that. So Africa is a huge market. Africa is 55 countries, which means 55 markets. So if you want to tap into this, then you look at the opportunity or the possibility that Mauritius offers as a center for production, but also as a center for services so that you can explore this market. So, and some of the opportunities which are here for Indian companies to look for investing are into services or manufacturing. And of course, when we speak about the India and Mauritius relationship, we always talk about being optimistic and also looking at the opportunities which are available. So thank you very much. I'll stop here. I just have a 2-minute video that I would like to show you so that you have a clear understanding of what we're speaking about. Thank you.
Thank you very much. His Excellency Seewraj Nundlall, sir, I would like to invite you here because we want to gift you something very special. Big round of applause for His Excellency Seewraj Nundlall, Councillor Investment and Trade, Mauritius High Commission. Thank you, sir. Inspiring talks. Thank you very much.